Hello everyone, this is Sumit and welcome to PETROGATE PYQ series, and today and this session will be on the questions which has been asked in GATE 2018 from the production engineering, so that we are going to discuss here. Okay, so mujhe and personally I like these kind of questions that has been asked in GATE 2018 na, so because these questions are very conceptual और इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रटने की या याद रखने की नहीं होती है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, तो दैट आई लाइक दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. ओके, एंड 2018 का पेपर मुझे पर्सनली एक अच्छा पेपर लगता है. ठीक है, तो नाउ द थिंग इज दैट सर, नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस. सो नाउ यू विल सी द क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 सेज आई हैव टू मैच द फॉलोइंग. ओके, एंड देयर इज सम रिटन ऑफ केमिकल नेम एंड देयर ऑयल फील्ड एप्लीकेशंस. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ सम एप्लीकेशन और लाइक द प्रोसेस which is just related to your oil field. Okay, and there are some chemical names and I have to match the following ki which chemical we are using in which kind of process or which kind of applications. Okay, so now I know, just tell me कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो आपके काफ़ी फेमिलियर है, जिसको आपने काफ़ी बार सुना है, देखा है अपने प्रोडक्शन या किसी भी सब्जेक्ट में. ओके, सो HCl I know very well. HCl is your acidization. Okay, it's a chemical. We will use this chemical in acidization, and acidization is a part of valve stimulation. Okay, no problem. And acidization and hydraulic fracturing is the part of valve stimulation. Okay, so definitely fourth goes to Q. Okay, so now you just see in there is any option, then Q is related to your fourth. Yes, I think this one is. Okay, so this is the right option. So आप लोग ऐसा इस तरह भी कर सकते हैं, बट बाकी ऑप्शन भी मैं आपको मैच करवा देता हूं, बट यू कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, और जनरली सभी स्टूडेंट ऐसे करते भी हैं, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज इससे टाइम खराब नहीं होता. ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू. ओके, सो नाउ मेथेनॉल इज ए जस्ट केमिकल इनहिबिटर और फॉर द गैस हाइड्रेट. ओके, बिकॉज गैस हाइड्रेट विल फॉर्म एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर. मीन्स इफ आई एम टेलिंग यू like properly, so I will say कि gas hydrate will form when the less temperature you are having and you are having high pressure. Okay, and if the condition is not fixed at this particular point, means high temperature, low temperature and high pressure, then your gas hydrate is just releasing or unequilibrium condition. Gas hydrate means gas will release from the hydrate, means ice सही हमारी गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा, और ये काम मेरा करवा सकता है मेथेनॉल. ये हमने पढ़ा भी है. ओके, सो नाउ आई थिंक P goes to third and P goes to third. I think your D option is right. No problem. And now zenith gum is used for viscosifier. Okay, you have a drilling fluid. In drilling fluid, what you will do? Well, you have to increase density or viscosity and properties. In fact, you want to change or modify the property of your drilling fluid according to the situation of the wellbore. So यहाँ पे हम लोग कई बार विस्कोसिटी बढ़ाना चाहते हैं. Sometimes we want to increase or decrease the viscosity. But if you want to increase the viscosity, then definitely this kind of chemical we have to add in your drilling fluid. Okay, and this zenith gum is used to increase the viscosity. That means it is called a viscosifier. It means S goes to second. तो definitely ये मेरा ऑप्शन राइट होगा ही होगा. Okay, so now the thing is that sir, what about the formaldehyde? Okay, so formaldehyde sometimes we use in drilling fluid or cementing or different like process to kill the bacteria. ओके, तो इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को यू कैन से ड्रिलिंग फ्लूइड बायोसाइड्स भी बोल देते हैं. मीन्स दिस कैन यूज टू किल और लाइक डिग्रेड द बैक्टीरिया एक्टिविटी और टू किल द बैक्टीरिया. ओके, सो नाउ यू विल सी R goes to first or R goes to first. I think D will be your confirm right answer. Okay, so this kind of match the following questions you can attempt और you just see कि कौन सा इनमें से आसान है, तो आप उस पर अटैक कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. That's why I am repeating again and again कि match the following question कभी गलत किसी का होता ही नहीं है, बशर्ते उसको कुछ भी ना पता हो. ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों को इतना पता होता ही है कि वो मैच द फॉलोइंग एटलीस्ट सही करके आ जाए. इनफैक्ट 4 से 5 4 क्वेश्चन तो मैच द फॉलोइंग आते ही हैं, और 4 दूनी 8 नंबर आपके कहीं जाते नहीं है.
ठीक है, चलिए. सो नाउ वी विल सी द ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, I want to select incorrect statement. Okay, I think you have seen ki there is a 4 statement has been written and I have to select ki which one is incorrect statement. Okay, no problem. Sir, the statement 1 says ki flash point is always lower than the fire point. This statement is really correct. Why? Because if I'm talking about this is neutral or like 28, like you can say neutral point. Okay, and if you are going upward direction, so there is a 2 points will come. First is flash point and then later will be fire point. Okay, it means suppose this is 30 degrees Celsius, so this will be less than your fire point. Okay, so हम लोगों को फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट से हमेशा कम दिखने को मिलता है. अगर मैं नीचे जाने की बात कर रहा हूं तो देयर इज आल्सो 2 पॉइंट, दैट इज योर पोर पॉइंट. ओके, एंड द लास्ट वन इज योर क्लाउड पॉइंट. ओके, सो अब यहाँ पे भी ये चीजें माइनस में हम लेंगे बिकॉज हम 0 से नीचे की तरफ जा रहे हैं. तो नाउ यू विल सी दिस इज -20 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस. सो पोर पॉइंट लेसर, पोर पॉइंट इज ग्रेटर देन क्लाउड पॉइंट. यू कैन से लाइक दैट बिकॉज इट्स ए नेगेटिव साइड. सो मीन्स पोर पॉइंट इज ग्रेटर देन क्लाउड पॉइंट है. ओके, ऐसा मत बोल देना कि पोर पॉइंट लेस देन क्लाउड पॉइंट. नो, नथिंग लाइक दैट बिकॉज इट्स ए नेगेटिव साइड. तो ये ज्यादा है, ये कम है. हालांकि यहाँ पे ये ज्यादा था, ये कम था, तो उल्टा है थोड़ा सा. ठीक है, चलिए ये बात समझते हैं. नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. फ्लैश पॉइंट इज always lower than fire point. Yes, this is your flash point and this is your fire point. Okay, and this is the lower than fire point. Flash point is always lower fire point. That is the right option. Okay, so but I want to find out the incorrect statement, but this is a correct. Okay, but this is not the right answer of this particular question. Okay, no problem. So this is correct statement but not the correct answer. Okay, पोर पॉइंट ऑफ ल्यूब ऑयल. ओके, पोर पॉइंट की बातें हो रही है, इट मीन्स यहाँ की बातें हो रही है. ओके, सो पोर पॉइंट ऑफ ल्यूब ऑयल कैन बी रिड्यूस बाय रिमूविंग वैक्सेस फ्रॉम इट. ओके, तो पोर पॉइंट होता क्या है? सपोज दिस इज योर पाइपलाइन. ओके, एंड दिस इज योर पाइपलाइन एंड इन दिस पाइपलाइन योर फ्लूइड इज फ्लोइंग. ओके, एंड सपोज क्या होता है कि सपोज द टेम्परेचर एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन इज सपोज आई एम टेलिंग यू 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ एनी प्रोसेस or any condition or any weather condition, temperature of this particular pipeline is reducing. Okay, reducing. Okay, so now 0 degree Celsius. Okay, now 0 degree Celsius and now -10 degree Celsius and now -20 degree Celsius. Okay, 20 degree Celsius. So what happened in -10 degree Celsius? Suppose there is some fluid which is flowing and definitely there is some waxes. Okay, and waxes is try to make solidify. Okay, try to make solidify and try to make solid semi solid material because wax क्या है? एक तरीके का एक solid ही है. ठीक है, सेमी solid बोल दो आप उसको, लेकिन solid ही है वो. ठीक है, अब बात समझना कि अगर मैं waxes इसमें, अब मेरा क्या है कि इसमें waxes है. सपोज आई एम टेकिंग सपोज देयर 20% waxes. ओके, एंड दिस waxes सबसे पहले अगर इस फ्लूइड में कुछ जमेगा, इस फ्लूइड में कोई solid स्टेट में बनने की कोशिश करेगा तो वो waxes ही होगा. ठीक है, तो -10 डिग्री पे मेरा वैक्सेस सॉलिड बन जाता है और मेरा फ्लूइड, अब ये अंदर जो वैक्सेस है दैट विल ब्लॉक योर पाइपलाइन और ये फ्लूइड मेरा ये वैक्सेस इन मेरा फ्लूइड को फ्लो कराने में हेल्प नहीं करता, इनफैक्ट उसको रोकने की कोशिश करता है. बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा है क्योंकि वैक्स 20% है तो ये माइनस क्या होगा, ये 10 डिग्री पे मेरा वैक्सेस मेरा सॉलिडिफाई हो गया है, यानी कि ये अब फ्लो नहीं हो रहा है, ये फ्लूइड मेरा फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो सीज हो गया है, फ्लो ब्लॉक हो गया है. उसी पॉइंट को मैं बोलता हूं पोर पॉइंट, कि जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पे, यानी कि जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पे मेरा ये फ्लूइड ब्लॉक हो जाए, अब फ्लूइड फ्लो ना हो पाए, उसी को मैं पोर पॉइंट बोल देता हूं. ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें से वैक्सेस हटा दूं, अब नाउ आई एम रिमूविंग ऑल द वैक्सेस, नॉट ऑल द वैक्सेस, आई एम रिमूविंग 10% वैक्सेस, तो ओनली द 10% वैक्सेस इज नाउ. ओके, सो कैन आई रिड्यूस
some more temperature? Can I do -15 डिग्री सेल्सियस नाउ? ओके यस, क्यों? क्योंकि वैक्सेस बहुत कम है. अगर मैं 15 डिग्री सेल्सियस भी कर दूंगा माइनस में, मतलब थोड़ा और घटा दूंगा, तो वैक्सेस अब नहीं बनेगा. अब मेरा वैक्सेस जो डिपॉजिट होगा या फ्लूइड मेरा बंद हो जाएगा फ्लो होना, वो -20 डिग्री पे होगा, अब 10 पे नहीं होगा, बिकॉज वैक्सेस बहुत कम है. जो मेरा जम जाता था अब वो जमने वाला मटेरियल अब नहीं है. ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट. ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि जैसे ही वैक्स को मैं रिमूव करता हूं तो मेरा पोर पॉइंट, वो पॉइंट जिस पे फ्लूइड बहना बंद हो जाता है, वो मेरा पॉइंट घट जाएगा. ठीक है, अब वो मेरा पॉइंट ये ना हो गया, ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो जमने वाला चीज है वो निकाल दिया है. अब मुझे उसको जमाने के लिए और नीचे टेम्परेचर जाना पड़ेगा. बात समझ रहे हैं? तो नाउ द पॉइंट इज दैट पोर पॉइंट ऑफ ल्यूब ऑयल कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग द वैक्सेस. यस, आई एम दिस पोर पॉइंट विल रिड्यूस व्हेन यू आर रिमूविंग द वैक्सेस, बिकॉज these waxes will not squeeze, these waxes will not be semi-solid form at this temperature, because waxes is in very less amount now in this particular pipeline or fluid. Okay, so I think you got it. चलिए, so next point, I think this is also right statement. Okay, now but I am searching for incorrect statement, so this is this not my answer. Fracturing is a well stimulation technique. Yes, hydraulic fracturing is a well stimulation techniques, I told you. Okay, so I think this is also right statement. Now the next statement is that coal bed methane typically contain more than 60% CO2. Okay, this is completely wrong statement. Okay, means if I'm telling you the composition of general composition of the CBM, so I will write ki that is your 95% your methane. Okay, and 2 to 3% your C2H4, and 2 to 3% you will see other CO2 or NO2. So these kind of component you will have. Okay, but he is written now. He is written typically 60%, more than 60% CO2. No, CO2 is only 2 to 3-4% CO2 only, and 95% you will see only the CH4. So this will be your completely wrong statement. Okay, so now the right statement here will be D answer. Okay, I think you got it. Now the next point is that, this is also a question, and this is a very important question, and this question we have generally discussed in our complete course. Okay, हमने काफी बार और काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, but still I will tell you the process. Okay, before going this particular question, I will show you these particular slides, these particular two figure. Okay, so now you will see my dear, okay, what happened, we have two kind of curves. Curve mean first curve you are having the IPR curve, and the second curve you are having VLP curve. Okay, and if you are changed, suppose I am telling you this is your well bore, and this is your well bore, and fluid is coming from the reservoir, or like from the pay zone, this fluid is coming like that. So what is the efficiency of this fluid is coming from reservoir to well bore, this will be representing by the IPR. That's why it's called a IPR, means inflow performance relationship. Okay, no problem. And the next curve is VLP, means what is the like behavior or like your performance of your well bore to uplift your hydrocarbon from bottom hole to surface. This will representing by VLP, vertical lift performance, and this is kind of curve. Okay, and if you are making change in this particular path, like from this point to this point, so maybe different VLP curve you will get. If you are make change from this point to this point, so maybe different IPR curve will be there. Okay, so जहाँ पे भी change होगा वहीं पे मेरे number of वही curve बन जाएगा. अगर मैं changes यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे number of IPR बन जाएंगे. अगर मैं changes यहाँ कर रहा हूं तो जितने भी चेंजेस करूंगा उतने ही नंबर ऑफ VLP बन जाएंगे. तो ये बात आपको मैंने नोडल एनालिसिस में बता रखी है, यूट्यूब पे फ्री वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख भी सकते हैं, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस इन अवर कंप्लीट कोर्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. सो नाउ द थिंग इज दैट सर, इफ यू आर चेंजिंग वेल हेड प्रेशर, वेल हेड प्रेशर मीन्स दिस इज द वेल हेड प्रेशर. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन इफ यू वेल हेड प्रेशर इज चेंज, इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर कौन सा आता है, व्हाट इज द प्रेशर यू विल गेट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. डेफिनेटली जो प्रेशर यहाँ से मुझे मिलेगा PWF, which is responsible to uplift this particular hydrocarbon, the same pressure you will get at this particular point. Okay, because of this pressure you will get at this particular point. Okay, suppose the pressure at this particular point is 500 and some pressure is used to engage the work to uplift this hydrocarbon. Suppose वो 200 प्रेशर मेरा इस फ्लूइड को उठाने में यूज हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम. 50 प्रेशर यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन में यूज हो गया, -50. ओके, सो
definitely you will get 250 remaining, so 250 pressure you will get at here. ओके, मीन्स PWF का कुछ पार्ट मेरा सरफेस पे शो होता है, यही मैं बोलना चाह रहा हूं. ओके, नो प्रॉब्लम. सो अब नाउ द थिंग इज दैट सर, नाउ द थिंग इज दैट सपोज दिस PWF इज लेस, तो डेफिनेटली ये भी मेरा कम ही रहा होगा क्योंकि इसी का कुछ हिस्सा मुझे यहाँ रिप्रेजेंट होता है. सो इफ दिस पर्टिकुलर प्रेशर यू आर गेटिंग लेस, तो डेफिनेटली PWF इज also would be less. Okay, so now you will see this is your IPR curve. Okay, no problem. And just tell me one thing, if you are changing different PWF or different P wellhead, so in this path, it means vertical lift performance curve path you are making changes. So definitely you will have number of VLP curve, not number of IPR curve. IPR will be same, simple, or one, means whatever the hydrocarbon is coming from reservoir to wellbore, that is your one curve. Okay, but you are changing now different PWF for different P wellhead, so it means because of different P wellhead, different VLP curve will be different, not IPR curve. IPR curve will same, but the number of VLP curve will be there. Okay, so now if your wellhead pressure is 100, means higher, so definitely PWF is also higher. This is the curve of PWF. Okay, and if you are having a less PWF, so definitely your left P wellhead, so PWF also less. If you are having less P wellhead, तो डेफिनेटली PWF ऑल्सो लेस. ओके, जितना मुझे यहाँ पे मिलेगा उसी का, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसी का कुछ पार्ट मुझे वहां मिलता है. इफ यू आर हैविंग लेस प्रेशर एट द PWF, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो हैविंग द लेस P wellhead. तो यहाँ पे जितना वेलहेड मेरा कम होता चला जाएगा, इसका मतलब मेरा PWF भी मेरा कम होता चला जाएगा. तो इसका मतलब अगर आपको कहीं पे ग्राफ, इफ यू आर हैविंग दीज टू ग्राफ्स, मीन्स ग्राफ A एंड ग्राफ B, सो वहां पे आपको बोल देगा कि इन ग्राफ A P wellhead इज higher or graph B if wellhead is higher. Okay, so you have to select the pressure of A is greater than pressure of B or wellhead pressure. Okay, no problem. Now just go to this particular. Okay, so हम लोग अभी पीछे आते हैं. हम लोग now just move to the back side. Okay, so now you will see this kind of graph PWF and Q for fixed well diameter. Okay, well diameter is same, but now we are making the graph between flow rate and your PWF. Okay, so you are having two graph, one PWH1 and PHW2. Okay, just tell me which PWF or which P wellhead is higher or which P wellhead is lower. You know very well that this P wellhead is higher because this is giving the high PWF. Okay, this is the lower P wellhead because this is representing of P less flowing wellbore pressure. Okay, so now the resultant is there that P wellhead 1 is greater than P wellhead 2. Okay, so now the relation you can select कि it means either this will be the right answer और either this will be the right answer. Okay, तो यहाँ से मुझे इन दोनों में से एक आंसर मिल जाएगा. अब डिपेंड करेगा मेरा सही आंसर कि इनमें से मेरा कौन सा सही ऑप्शन होगा. ठीक है, सो नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो व्हाट हैपन इफ यू आर हैविंग different diameter of the tubing. Okay, means you are reducing the diameter of the tubing, like first you have the diameter of the tubing is like 2 and 3 by means something 2 inches you can take example. Okay, so if you are having less tubing diameter, so it means there will be less hydrocarbon you will get at the surface. Okay, you will get at the surface, no problem. And if you are increasing the diameter, so definitely diameter is increasing, it means volume of the produced tubing also increasing, so definitely you will increase your flow rate. Suppose this is the 20 STB per day you are getting. If you are increasing the diameter which is like 3 inches, so definitely you will get the higher flow rate which is like 30. Okay, if you are more increase the like tubing diameter, so you will get the higher flow rate, that is your 50. Okay, but अगर हम लालच करते चले जाएंगे कि सर डायमीटर का ट्यूबिंग का डायमीटर बढ़ाते चले जाओ, you just increase the diameter of the tubing so that you will get the maximum hydrocarbon. So ये मेरा एक मिसकंसेप्शन है. ऐसा जनरली नहीं होता है, ऐसा होता जरूर है बट ये एक लिमिट के बाद ऐसा होना बंद हो जाता है. ये मैं आपको बता देता हूँ. होता क्या है कि जैसे ही सपोज यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर ट्यूबिंग, so you will get STP like 20. Okay, and if you are having
greater diameter, you will get the production 30, no problem. And if you are having larger diameter, what happen? You will get the 50, okay, no problem. But हम लोग बहुत greedy हैं, लालची हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कम पैसों में ज़्यादा आउटपुट चाहने की हमारी आदत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं बहुत बड़ा डायमीटर का पाइप ले लूंगा, सो व्हाट हैपन, इससे मेरा क्या होगा, मेरा वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सपोज यू आर टेकिंग लार्जर डायमीटर ऑफ द पाइप टू प्रोड्यूस हायर एंड हायर हाइड्रोकार्बन, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, you will see this is the IPR graph one, because you are changing in diameter, means we are changing in the path of this. ओके, तो डेफिनेटली VLP कर्व विल बी डिफरेंट, नोट द IPR कर्व। सो डायमीटर ये होगा तो ये मेरा कर्व बन गया। इफ यू आर डायमीटर दिस तो यू विल गेट दिस हाइड्रोकार्बन, इफ यू आर डायमीटर दिस डायमीटर दिस तो यू विल गेट दिस हाइड्रोकार्बन। बट हम लोग अगर इसके बाद भी अगर बढ़ा देते हैं अपना डायमीटर तो यू विल गेट लेस हाइड्रोकार्बन। सो हम लोगों को एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वी विल नॉट इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूबिंग बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लिमिट, जिससे मेरा और लॉस ना हो जाए। हम लोग लालची हैं, यहां से हम और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ हायर डायमीटर, सो दैट इट्स ए पैरामीटर इज हायर, ओके, सो व्हाट हैपन, contact area of the fluid which is contact to the tubing area or internal tubing area, so that will create a higher friction. Okay, so what happen, because of this higher friction you will not get higher hydrocarbon at the surface. So it means if you are taking, listen me carefully, if you are taking suppose 5.5 inches, so you will get this hydrocarbon. Okay, if you are taking 3.5 inches, you will get this hydrocarbon. Okay, and now you are increasing more hydrocarbon, so you are increasing the diameter 7 inches. So what happen, because of this 7 inches hydrocarbon, now you must get the hydrocarbon greater than this, means greater than this particular 5.5 diameter. Okay, but your IPR curve will be like this, so you will get less hydrocarbon as compared to this in 7 inches tubing also, because of higher friction losses and number of losses you will have. ओके, तो क्या होता है कि मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डायमीटर बढ़ने से मेरा जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ता जाता है। आई एम टेलिंग यू, जैसे जैसे मैं डायमीटर बढ़ाता हूँ, डायमीटर बढ़ाता हूँ तो फ्लो रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट के बाद फिर वो अगर मैं और ज्यादा डायमीटर बढ़ा दूंगा तो मेरा फ्लो रेट घटता जाएगा। तो ये ऑप्टिमम डायमीटर ऑफ द ट्यूबिंग है, एंड दैट आई एम डिसाइडिंग दिस ऑप्टिमम डायमीटर ट्यूबिंग विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। ओके, एंड बट अगर हम जनरली बात करें, अगर मैं एक्सेप्शनल केस की बात ना करूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डायमीटर बढ़ने से दिस इज योर IPR एंड दिस इज योर फ्लो रेट, दिस साइड इंक्रीजिंग, इफ योर डायमीटर इंक्रीजिंग 2 inches तो योर फ्लो रेट यू आर गेटिंग दिस, इफ यू आर इंक्रीजिंग द डायमीटर तो योर फ्लो रेट यू विल गेटिंग दिस। ओके, इफ यू आर इंक्रीजिंग मोर डायमीटर तो योर फ्लो रेट इंक्रीजिंग लाइक दिस। ओके, इफ यू आर इंक्रीजिंग मोर डायमीटर so this time your flow rate will decrease, means you will get less. Diameter is higher as compared to this, but flow rate is lesser. So it means this is your optimum diameter value, means above this that will not mean your flow rate will increase because of increasing of diameter. Okay, यहाँ पे मेरा एक exceptional आ गया, but normally अगर मैं बात करूँ, but in normally what happen, because of suppose 1 point and 2 point and this is a diameter 1 and diameter 2, तो जनरली मैं क्या बोल दूंगा, अगर मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं की है, कोई भी ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं की है कि मैं बियॉन्ड से ज्यादा चला गया हूं एंड मैं एक्सेप्शनल लिमिट से आगे आ गया हूं, तो अगर ऐसी कोई नॉर्मली बात नहीं डिस्कस की है तो आई कैन से सर इन नॉर्मली D1 इज लेस देन D2, मींस इन दिस पर्टिकुलर दे डेफिनेटली यू आर गेटिंग हायर रेट एज कंपेयर टू दिस, सो डेफिनेटली दिस D2 इज ग्रेटर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नॉर्मली दिस conclusion I can conclude from this particular graph. So now you will see D2 is greater than D1, so I think from these options this will be your right answer. Okay, so now option A will be correct, so you will see the option A will be correct. Okay, very simple question. Okay, very simple question. और इसीलिए मुझे ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें थोड़ा दिमाग लगता है और याद रखने वाली और जो रिमेंबर वाली चीज़ें होती हैं ना, दैट विल नॉट यूज इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, चलिए, सो नाउ वी विल सी सम नेक्स्ट थिंग. ओके, सो दिस इज द ऑल, ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है भाई. आ गया ना, देखो आ गया ना. चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू लर्न
learned some numbers, okay, some constant numbers, okay, that some numbers is related to your fluid mechanics and some numbers is related to your heat transfer, okay. So I know, और मैंने आपके लिए टेबल दे दी है कि सर अगर आप ये बेसिक्स नंबर याद रख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होगा। तो ये 3-4 नंबर है जो आपको याद रखने हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ नंबर्स हम लोगों ने अपने कंप्लीट लेक्चर सीरीज में डिस्क्राइब कर भी रखे हैं, ओके। सो वी हैव आल्सो डिस्कस दीज नंबर्स इन आवर लेक्चर सीरीज, सम ऑफ दीज नंबर इन आवर लेक्चर सीरीज, ओके। एंड बट स्टिल आई गिव ए पिक्चर एंड आपको नेट पे काफी मिल जाएगा वैसे, सो यू कैन ऑल्सो टेक डाउनलोड सम पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट, नो प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल जस्ट मैच द फॉलोइंग, ओके। देयर इज numbers written or like dimensionless number has been written and I have to match the following, which is the relation to what is the definition of this particular number, okay, simple. I know that simply पकड़ो पहले कि I know the Reynolds number, okay. Reynolds number सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, every students know about the Reynolds number, that is the ratio of inertial force and viscous force. It means R goes to 1, okay, R goes to 1, it means R goes to 1, I think this R goes to 1 or R goes to 1, R goes to 1, so I think from these options there will be a right one option, okay, no problem. And the second number that I know, that is your फ्लूइड नंबर, okay. हमने ये इंजीनियरिंग में देखा है फ्लूइड नंबर, ये भी कहीं एक फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ही था, ठीक है। सो इनमें कहीं ग्रेविटी वाली बात आती थी, मेरे याद आ रहा है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चा एक अप्रोच करना चाहिए, हाउ टू स्टूडेंट्स अप्रोच द क्वेश्चंस, ओके। इसमें कुछ ग्रेविटी वाली कुछ बात मैंने पढ़ी थी, तो यहाँ नाउ वी विल सी द ऑल ऑप्शंस। सो देयर इज वन ऑप्शन, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यू कैन ऑल्सो सी हियर लाइक फ्लूइड नंबर भी inertial force upon gravity force ratio of inertial force to the gravitational force, okay. So it means fluid number goes to 4th, okay. So it means Q goes to 4th, it means Q goes to 4th, I think this, so this is the right option, ओके। इनमें से क्यू सेकंड पे है, थर्ड पे है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोगों को चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मैच द फॉलोइंग किसी स्टूडेंट का गलत नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर भी देख लेते हैं, वेबर नंबर यू नो वेरी वेल, यस, इनर्शियल फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स, ओके। तो रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड इंटरफेशियल टेंशन फोर्स, नो प्रॉब्लम। सो इट मीन्स P goes to third, it means P goes to third, no problem. Nusselt number you can see heat conduction, heat transfer, and what is the heat transfer in convection and conduction, okay. So now you will see, और ये मुझे इसलिए भी पता है कि Nusselt number is just related to your heat transfer. So heat transfer मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है, so I will always match S goes to second, so this will be your right answer. But that is ratio of conventional heat transfer to the conductor, okay, simple. So match the following, अगर आपको एक भी दो भी पता है तो आपका काम कहीं ना कहीं बन जाता है, ठीक है। I think you got it ना। चलिए, तो this question is बहुत very simple, okay. Now the thing is that this is a very important and very interesting questions जो मेरा कहीं ना कहीं मुझे फिर फेवरेट लगता है, ठीक है। So now we will see this particular question, and before explaining this particular question I will tell you some more important points which is related to your terminal velocity, okay, because there is a concept we will using in terminal velocity or settling velocity, and before starting this particular question I will tell you some more interesting points, okay, more interesting points. So now you will see what, suppose your object is fall down in any particular medium, like suppose take an example, this is your water tank and you are inserting a ball which has a particular density and which has a particular volume, okay, and that ball is having some mass, definitely mass means this is your mg, and m can be break into the volume and density and then g multiplication of g. So now you can see this is the force which is acting downwards because of weight of this particular sphere, no problem. And because of this forces, this ball is try to going to downwards direction, okay, no problem. And because this ball we have inserted in any particular fluid, so इसमें से कुछ forces मुझे buoyancy ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा, there was some force of buoyancy which is exerting towards upward direction, okay, no problem sir, यहाँ तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और buoyancy force किस पे डिपेंड करेगा, what is the volume has been displayed or displaced by this particular ball, okay, वो कैसा होगा, वो जितना इसका वॉल्यूम है उतना डिस्प्लेस करेगा और जो इसकी डेंसिटी है उतना डिस्प्लेस करेगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे वही चीज मिल जाती है कि मुझे एक buoyancy force मिल गया, that is
acting upward direction and weight of this particular object acting downward direction. ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, लिसन मी केयरफुली, होता क्या है, लिसन मी केयरफुली, कि जैसे जैसे ये बॉल मूविंग डाउनवर्ड, सो कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आती है, अगर आप एक मंजिल से कूद रहे हो और आप 10 मंजिल से कूद रहे हो, तो आप जमीन पे कितने प्रेशर और कितने वेलोसिटी से टक्कर खाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने ऊपर से कूदे हो। बात समझो, अगर आप एक ही मंजिल से कूदे हो तो आपको चोट शायद कम लगे, अगर 10 मंजिल से कूदे हो तो आपको चोट शायद ज्यादा लगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी वेलोसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी आपको खींचती है, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग विद द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 9.8 मीटर पर सेकेंड means in 1 second this velocity is increasing। एक सेकंड में आपका 9.8 वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अगर आप यहां से गिरोगे, आपको 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 सेकंड लगा, तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड से आपका धरती पे मुंह लगने वाला है भाई, समझ रहे हो ना? यू विल फॉल डाउन विद 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, बहुत जोर से लगेगी। लेकिन अगर आप 10 बिल्डिंग से 10 मंजिल से कूदेंगे, तो अगर आपको 10 सेकंड लग रही है, तो हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की इंक्रीमेंट होगा। स्टार्टिंग में 0 था, एक सेकंड में 9.8, अगले सेकंड में 9 दूनी 18 के 18 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका जब धरती पे आप लगने वाले हो ना भाई, बहुत दबा के लगने वाले हो, ठीक है? तो यू विल फॉल डाउन एट दिस पर्टिकुलर सरफेस ना, सो दैट विल बी अप्रोक्स वेलोसिटी मीन यू कैन से 98 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट्स ए वेरी हायर। तो यहाँ मेरा बोलने का मतलब ये है, तो सर इसका मतलब तो ये रहा, तो यू विल सी कि इसका मतलब जो चीज़ जितनी ऊपर से गिरेगी वो उतनी ही ज़्यादा रेट से, उतनी ही ज़्यादा फोर्स से धरती पे गिरने वाली है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर, दैट मीन्स व्हेन द रेन इज कमिंग, तो रेन जो है बहुत ऊपर से गिरती है, बादलों से गिरती है, तो वो तो धरती पे इतनी जोर से गिरनी चाहिए कि धरती में गड्ढे हो जाने चाहिए भाई, होल हो जाने चाहिए। बारिश में आप आराम से नहा लेते हो, आप नहा भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक भी बूंद अगर आपके सर पे गिर गई तो आपका सर तो फूट जाएगा भाई, बात समझ रहे हैं? तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉट हैपन। वाई सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो यहाँ पे 9.8 थी एंड जो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे 98 है, और अगर आप 20 मंजिल से कूदोगे, आप बोलोगे सर वेलोसिटी 200 है, तो ऐसा होता तो जरूर है, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपकी वेलोसिटी बढ़ना बंद कर देती है। क्यों? कैसे सर? मतलब मैं समझा नहीं। वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी, आई एम डैम श्योर बिकॉज ऑफ टाइम, ओके, बट एट एक पॉइंट के बाद आपकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, जिसको मैं टर्मिनल वेलोसिटी बोल देता हूं। ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब बारिश की बूंदें आती है, बहुत तेजी से आती हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना बंद हो जाता है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो उस केस में मेरे बारिश की बूंद बहुत ज्यादा वेलोसिटी से सरफेस पे नहीं आ पाती है। इतनी बात मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब द क्वेश्चन इज दैट कि सर हाउ इट पॉसिबल कि योर वेलोसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और रेन ड्रॉप्स इज नॉट इंक्रीज आफ्टर अटेनिंग सम पर्टिकुलर वेलोसिटी? ऐसा क्यों हो रहा है सर? वो उसके बाद नहीं इंक्रीज हो रही है, उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है? चलिए, सो नाउ क्या होता है, जैसे उसका एक फैक्टर है, या उस चीज को मैं समझाने के लिए एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो होता है ड्रैग फोर्स। जैसे आप कभी बाइक पे मूव कर रहे हैं, या आप बाइक्स पे जा रहे हैं, या आपकी ड्रॉप्स ऊपर से गिर रही है, या आपका ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर मूव कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, लिसन मी केयरफुली, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, what is the velocity of your object, what is the velocity of your whenever you are riding a bike, what is the velocity of your raindrop when the raindrop is falling from a cloud to your surface, and what is the velocity of this particular object in your water tank? So जो भी velocity रही होगी, उस velocity के against एक pressure also exerting towards the upward direction, जो कि जिसको मैं drag force बोलता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी velocity मेरी attain कर लेता है, जो भी object moving करता है किसी medium में, उसके ऊपर buoyancy के अलावा, अगर इससे मतलब समझिए, अगर ये object static condition में है, यहीं पे रुका हुआ है, तो उसमें buoyancy भी लग रही है, ये भी लग रहा है, कोई बात नहीं है। बट अगर ये मूव कर रहा है, नाउ
listen me carefully. If this point or this object is in static condition, now one force is downwards and one force is upward direction because of buoyancy. So that is your in normal case, okay. But if this object is moving in any particular medium, either this medium is water, either this medium is air, no problem. But this object is moving now. So because of moving, because of some velocity, a force is acting that is in reverse or opposite direction of moving object. So that is called a drag force. मैंने क्या बोला सिंपल करके आ जाते हैं बात को कि जैसे कोई चीज मूव करती है किसी बॉडी में, उसके अगेंस्ट ऊपर उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में देयर विल बी ए फोर्स दैट इज कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स. और वो ड्रैग फोर्स का जो रिजल्ट होता है वो मेरी वेलोसिटी का ही एक परिणाम होता है. जो मेरी वेलोसिटी, जो मेरा ड्रैग फोर्स का वैल्यू है या रिजल्टेंट है या मैग्नीट्यूड है, दैट विल डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली दिस वेलोसिटी फैक्टर. दिस वेलोसिटी फैक्टर. ओके, बात समझ रहे हैं क्या? अभी बात समझना, बिल्कुल फील के साथ बता दे रहा हूं, ठीक है. मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और आप इसको ऐसे फॉल डाउन कर रहे हैं एंड दिस इज योर सरफेस. ओके, एक सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, योर वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 9.8 because acceleration is 9.8 meter per second square. So in one second your velocity is 9. Suppose simple calculation करने के लिए you will take a 10 meter per second. Okay, 10 meter per second. After 2 seconds your velocity of this particular object is 20 meter per second. Okay, listen me carefully, बहुत मजा आने वाला है. After 3 seconds your velocity of the object is 3 meter per second, 30 meter per second. I can also solve that particular question with the formula, no problem. But उसके रिलेटेड बहुत चीजें ऐसी हैं जो आगे पूछी जा सकती हैं, ठीक है. तो ये मेरा एक बात है जो मैं बताना चाह रहा था. अब बात समझना. सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट टू मूविंग डाउनवर्ड्स. ओके, आई एम टेलिंग यू, लिसन मी केयरफुली. सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक कंडीशन, मींस ओनली द बायंसी फोर्स इज एक्टिंग एंड ओनली द ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग एंड बोथ आर इक्विलिब्रियम एंड दीज आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर. दिस ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज स्टेबल कंडीशन. ओके, सपोज दिस फोर्स इज इज हायर. ओके, दिस फोर्स इज higher, suppose 20, okay, and this buoyancy force is acting like 10 Newton or like 20 Newton. So in which direction this object is try to moving? Definitely this is try to moving downward direction. Okay, so what happen when this moving downward direction? The velocity will be there. Okay, velocity will be there. In 1 second the velocity will be, in 1 second velocity will be 10 meter per second. 10 meter per second. So if you are putting 10 meter per second value here, so you will get your drag force which is opposite direction. Suppose the resultant of this drag force is point +2. Okay, so now upward direction forces is what? Upward direction forces is your like 12 or downward direction is 20. Now what happened? The resultant of the downward direction is only 8 Newton now, जो कि पहले 10 था, ठीक है. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसने वेलोसिटी अटेन करी है, उस वेलोसिटी से मुझे वेलोसिटी मिली है, वेलोसिटी से मुझे ड्रैग फोर्स मिला है, उससे मुझे 2 प्लस वैल्यू मिली है, टोटल फोर्स अब मुझे 12 मिल रहा है. बात समझ रहे हैं? अब मेरा क्या होगा 2 सेकंड बाद, लिसन मी केयरफुली. अब मेरा 2 सेकंड, अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ और बना दे रहा हूँ, ठीक है, जो टाइम है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ योर acceleration and velocity also. Okay, so now just tell me one thing. Initially in 1 second velocity is what? 10 meter. 1 second, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी मेरी 10 हो गई है, ठीक है. और एक्सेलरेशन मेरा पहले स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन मेरा काफी था, ज्यादा था, बट जैसे ही मेरा क्यों था? क्योंकि मेरा यहाँ 20 था और यहाँ 10 था, तो द डिफरेंस वाज 10. सो इट मीन द एक्सेलरेशन इज हायर. ओके, एक्सेलरेशन इज हायर, नो प्रॉब्लम. बट आफ्टर 1 सेकेंड रिजल्टेंट फोर्स विल बी 20 downwards and 12 is upwards now after 1 second. So it means the difference is only the 8. So now the acceleration will be also less. बात समझ रहे हैं? क्योंकि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा एंड योर ड्रैग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट विल बी योर 4 एंड यू विल गेट दिस टाइम अपवर्ड डायरेक्शन इज 14 एंड दिस योर 20. नाउ द डिफरेंस मैग्नीट्यूड ओनली योर 6. So it means downward acceleration or velocity increment will also be less.
यही तो ये ज्यादा है, ये कम है, ये इसको नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ले जाने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ ले जाने वाले फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं होगा तो ये उसको बहुत तेजी से एक्सेलरेट नहीं करेगा, करेगा जरूर बट कम एक्सेलरेट से। ठीक है, तो आप लोग देखोगे एक्सेलरेट आफ्टर 2 सेकंड बाद थोड़ा और डिक्रीज हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी बढ़ गई है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब मैं क्या देखूंगा, सेम एक केस और ले लेता हूं, आई विल टेक वन केस मोर। सो दिस इज द आफ्टर 2 सेकंड द वेलोसिटी, 3 सेकंड वेलोसिटी ऑफ 30। ओके, सो नाउ आई विल पुट हायर वैल्यू, तो ड्रैग फोर्स इज ऑल्सो हायर, तो दिस विल बी योर 0.6, so you will be 16 and this is your 20 minus 16, तो only 4 resultant force moving downwards। इट मीन्स ये इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन इस बार नहीं देगा, इस 3rd सेकंड से लेके 4th सेकंड के बीच में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन इसको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि समझ गए आप क्यों मिलने वाला है। तो इसका मतलब आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती चली जा रही है और आपका वेलोसिटी जो है बढ़ता चला जा रहा है। जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी कि अब आपको एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज मतलब डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन नहीं एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, सो इट मींस एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब एक्सेलरेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो चेंज इन वेलोसिटी आल्सो नॉट एग्जिस्टिंग, तो इट मींस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। दिस इज योर कोऑर्डिनेट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मैंने यही बोला था कि वेलोसिटी आपकी एक पॉइंट पे बढ़ेगी जरूर, लेकिन एक पॉइंट पे आके फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो यही आपकी एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, और ये तब तक बढ़ती रहती है जब तक आपका एक्सेलरेशन 0 ना हो जाए, और ये 0 तब तक होता रहता है जब तक आपका ड्रैग फोर्स और ये वैल्यू मिलके इस दोनों के बराबर ना हो जाए, और ये तब तक चलता रहता है जब तक आपकी वेलोसिटी से ऐड किया हुआ वेलोसिटी के द्वारा वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका एफडी आ रहा है ये 10 ना बन जाए इसके हिसाब से, तब तक ये एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा और तब तक आपकी वेलोसिटी एक टर्मिनल और लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी तक नहीं पहुंचेगी। बात शायद कहीं कहीं दिमाग में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे सर ये बराबर अगर हो गया है 20 and 20, सो दिस ऑब्जेक्ट इज शुड बी एक स्टेबल कंडीशन, तो हमारी बूंद वहीं पे रुक जानी चाहिए जहां पे भी वो रुकी है, जहां पे भी उसका फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी उसको मिली है। ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जो ये बैलेंस हुआ है ये सिर्फ इस वेलोसिटी की वजह से ही हुआ है। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी मेरी 0 हो जाए तो ड्रैग फोर्स भी 0 हो जाएगा और ये बाउंस से 10 ही मिलेगा और ये नीचे 20, तो फिर से वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बात समझना, ये जो फोर्स बैलेंस हुए हैं ये जस्ट इस वेलोसिटी के कारण ही हुए हैं, और वेलोसिटी अगर नहीं होगी या 0 होगी तो आपकी बूंद वहीं पे रुक जाएगी जहां पे वो बादलों से निकल के कहीं बीच में रुक जाएगी, या आप भी अगर बिल्डिंग से कूदोगे ना तो आप भी कहीं बीच में स्पाइडरमैन बन जाओगे भाई, वहीं पे रुक जाओगे जहां पे आपकी ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम हुए हैं। नहीं, इसलिए नहीं होता है, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और अगर ये वेलोसिटी ही आपकी जब यहाँ पे रुक जाते हैं तो वेलोसिटी मतलब नहीं है आपकी 0 है, तो ये कोई बात नहीं है, फिर आप बैलेंस ही नहीं हो पाओगे। बात समझ रहे हो? तो ये जो चलने का ढंग है इसी की वजह से ये चीजें हुई हैं और आप चलने को ही नहीं रोक सकते। बात समझ रहे हैं? चलिए, सो नाउ यू विल सी ए पर्टिकुलर आई थिंक मुझे लगता है कि ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई थिंक आई हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, और नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, सो योर टाइम के साथ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। व्हेन दिस इज योर कांस्टेंट तो इट मींस एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ आंसर मुझे यहाँ से कुछ अच्छा मुझे बताइए, लिसन मी केयरफुली, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे मीन्स दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इक्वल टू this force, so then this velocity is called terminal velocity। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड दिस इक्वल टू दिस। सो अगर थोड़े बहुत मैं इधर उधर पैरामीटर्स को लेके जाऊंगा, सो यू विल गेट इफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू g d square density of upon solid or means you can say drop, okay, minus density of fluid, okay, or upon 18 mu. This is your formula, okay।
You have to remember number of conclusion you can find out from this particular formula, because अगर आपको मैं theoretical question भी बोलना चाहूँ तो इस formula से मैं कई बहुत सारे theoretical question फ्रेम कर सकता हूँ, ठीक है, no problem. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि this is the density of your object which is moving in this particular fluid, okay, and this fluid can be your oil, liquid or like any fluid or air also, ठीक है, no problem. तो यहाँ पे अगर solid की बात करूँ कि वो क्या object है, वो बूंद भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है, रेन ड्रॉप भी हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम. इसको सॉलिड बोलना ज़्यादा सही नहीं है, इसको एक बोलना सही है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है और जिस फ्लूइड में जिस मीडियम में मूव कर रहा है, तो दैट विल द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ जस्ट रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं. तो देखिए, इस टर्मिनल का फायदा उठाते ही, देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, हालांकि इस टर्मिनल का कॉन्सेप्ट का फायदा उठा के वी कैन सेपरेट आउट द थिंग्स. सर कैसे सर मैं समझा नहीं सर. दिस टर्मिनल वेलोसिटी बेनिफिट इफ आई वांट टू टेक, सो आई कैन टेक इन सेपरेशन काइंड ऑफ प्रोसेस. आई विल शो यू. सो नाउ वी विल सी व्हाट you can see this is your illustration process. This is illustration process. In this particular illustration technique is what? Sir, illustration techniques क्या होता है? In this illustration techniques we are going to separate out two kind of different material, different density grains or different size grains. So we can separate out because of this illustration techniques with the help of terminal concept, with the help of terminal velocity concept. Okay, so in this, sir क्या सिंपली बोल दे रहा हूँ कि what about the illustration techniques? This is the techniques we are going, in this techniques we are going to separate out the grains or separate out the materials or with the help of velocity, terminal velocity concept. So that techniques is called illustration techniques. मैं भी बता देता हूँ क्या होता है. मान के चलिए, listen, I know this particular formula, Vt equal to G d square density of solid minus density of your fluid, okay, and upon 18 mu. This is your formula. Okay, no problem. Suppose you are having same grain density means density of the, suppose two material you are having, one and like two. One is smaller, another is like a coarser grain and finer grain. Okay, and density is same, no problem. So just tell me which ग्रेन हैज़ द हायर टर्मिनल वेलोसिटी. अगर मैं इसको ऊपर से घेर दूँ, तो अगर मैं ऊपर से इन दोनों ग्रेन्स को ऊपर से फॉल डाउन करता हूँ, तो इनमें से कौन से मटेरियल की वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी? तो डेफिनेटली टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर स्क्वायर. नो प्रॉब्लम. तो बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज आई टोल्ड यू द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बोथ ग्रेन्स इज कॉन्स्टेंट and fluid density is also constant, fluid viscosity is also constant. So it means higher grain diameter has the higher velocity, higher terminal velocity, and this is the lower terminal velocity. Okay, and just tell me one thing, अगर मैं नीचे से उतनी ही velocity में, इसकी velocity suppose like I take example, suppose 20 है and इसकी velocity 30 है, because this is the like you told me na, greater diameter it means greater terminal velocity, it means greater diameter greater terminal velocity. So अगर मैं listen, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रीम भेज दूं, इफ आई एम सेंडिंग, यू कैन से स्ट्रीम मीन्स यू कैन से लिक्विड भेज दूं, वाटर भेज दूं, इफ आई एम सेंडिंग द वाटर विद द वेलोसिटी ऑफ 20, सो 20 you can say 21, okay, means small greater than this. So what happen, this particle or like a smaller diameter particle is moving down 20 meter per second, and coarser particle smaller particle moving down your 30 meter per second, and the stream is moving upward direction 21 meter per second. So just tell me, this stream take which grains and shifting to upward direction, this one and this one. डेफिनेटली 21 वाला 20 को हरा देगा, और 20 वाले हैं हमारे स्मॉल पार्टिकल्स, और उनको वो सरफेस पे निकाल देगा. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फाइन पार्टिकल सरफेस से सेपरेट आउट हो जाएंगे. बात समझ रहे हैं? ठीक है. सो नाउ द थिंग इज दैट सर, दिस 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी विल कमिंग डाउनवर्ड्स 21, सो दिस विल बी योर 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. यू विल गेट द कोर्सर पार्टिकल और ग्रेटर और हायर ग्रेन डायमीटर पार्टिकल टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बात समझ रहे हैं भाई? तो इसका मतलब क्या मैंने कर दिया, क्या ऐसा ही मैंने इलस्ट्रेशन टेक्निक्स में टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के मैंने फाइन और कोर्सर ग्रेन को सेपरेट
सेपरेट आउट कर दिया है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं। आई विल टेक सपोज दैट पार्टिकल डायमीटर इज सेम, ठीक है, और डेंसिटी इज डिफरेंट, ठीक है, इट हैज द हायर डेंसिटी, इट हैज द लोअर डेंसिटी। सो जस्ट टेल मी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन डायमीटर, डेंसिटी ऑफ योर पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जिसका पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतनी ही तेज से नीचे आने की कोशिश करेगा और ये उतनी ही कम रेट से आने की कोशिश करेगा। सेम कॉन्सेप्ट आई एम यूजिंग, डायमीटर इज सेम, सो दिस इज द concept, this is the constant in both cases. So suppose in this diameter the velocity is same, I am taking 30 and this is lesser density is 20, and again I am sending the water stream with the 21. So you will see 21 means lesser density particle will be going upward direction and higher density particle will be going downward direction. So I can separate out my grains on the basis of density if the diameter is constant. I can also separate out my grains on the basis of different diameter if the density is constant. तो हम लोग दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर, अब मुझे यहाँ एक चीज़ और बताइएगा। So which has suppose the diameter is same of the particle, okay, and this is a lesser density or higher density, okay. So minimum velocity, what should be the minimum velocity should I providing to separate out these things? बताइए, सिंपल। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इज 20 एंड बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी 30 बिकॉज दिस वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हायर एंड लोअर अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल डेंसिटी। ओके, सो जस्ट टेल मी इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा या कम होगी? डेफिनेटली दिस पार्टिकल विच हैज द लेसर डेंसिटी हैज द लेसर वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट विल बी द मिनिमम फ्लूइड velocity I have to providing to separate out these kind of things? Definitely I have to provide 20 so that 20 beat it up and 30 will be going downwards. बात समझ रहे हैं? So अगर वो मुझसे पूछेगा what should be the minimum terminal velocity, so I will consider this kind of grain means which has the lesser density, not the this grain. बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए। Now read the question. A dilute mixture of coal and sand. Okay, there is a two particle is coming which has the coal and sand, both have same diameter. Okay, means this kind of situation he is talking about, not this kind of situation. Means diameter is constant, density is different, and this case was diameter is different and density is constant. So he is talking about this case. Okay, now and the density 1800 kilogram meter cube and 2600 kilogram meter cube respectively. Okay, so means coal density is this and sand density is this, and coal density is lesser. It means coal has lesser density, it means coal terminal velocity will be minimum as compared to sand. बात समझ रहे हैं? Because density is less. Okay, no problem. And respectively to classify by illustration technique using water. Okay, water is moving as a fluid stream. Okay, and density was also fluid. Also I am having because मुझे यहाँ पे use करना है इसका. Okay, 1000 kilogram per meter cube. Viscosity also given. Assuming Stokes law is applying, minimum settling velocity of the particle in the mixture. Just tell me both the particle is settled down. Which particle has the minimum terminal velocity? Definitely which has the lesser density. बात समझ रहे हैं? Okay, so I will consider my grain is coal not sand. यही एक समझने की बात थी। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में इतनी सारी कहानी कही है। ठीक है, चलिए, तो कोल मेरा फिक्स हो गया, सैंडस्टोन की डेंसिटी में नहीं लूंगा, कोल की डेंसिटी लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है। बात समझ रहे हैं? चलिए, और मुझे नहीं बोला कि व्हाट विल बी द स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है। स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है मतलब ये स्टोक्स लॉ भैया ने ही बताया था। दीज आर द थिंग्स इज डिस्क्राइब बाय द स्टोक्स लॉ। ओके, दिस ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल जस्ट कैलकुलेट द क्वेश्चन सिंपली। ओके, जल्दी से कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन में यार। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। Okay, I know this particular formula. Terminal velocity equal to G d square and density of coal minus density of fluid or water, you can say, upon 18 mu. No problem. So now I am putting the value in this particular formula, and you will get the answer. It's a very simple. No unit trap you will have. Okay, it's a very simple. कोई unit trap नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे। सिंपल है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ so that I can explain this question. I can solve this question here only. So now velocity, terminal velocity equal to
terminal velocity equal to, and definitely the unit of the velocity will be meter per second. Okay, definitely whatever the answer you will get, that should be in fact meter per second. Okay, so now the G value, I am writing everything with the proper unit, otherwise you will get the mistake. Okay, so now what I will do G is what, 9.81, value is given in the questions. GATE examiner बहुत अच्छे तरीके से दे के रखेगा आपको. Unit is meter per second square. Diameter is what 100 micron meter. You will see the 100 micrometer, so I can write it what 100 10 to the power minus 6 meter, and मुझे सारी value, and I have to put all the values in meter per second, not micron and kind of things. Okay, so this is the this is diameter square, so I will do what 100 multiply 100. Okay, 100 and 100 2 times I am writing, and 10 to the power minus 6 to the power square, so that is our minus 12. So it means what I have written the square of this. Okay, यहाँ d square है, and this was the d, and this was the d, and I want to calculate d square, तो d square मैंने यहाँ पे रख दिया. Okay, no problem. So now I have to put the core density, means that is your 1800 minus fluid density or water density 1000, 1000, and unit will be what, kilogram per meter cube. Okay, and this is your diameter square, means meter square, so I will write the unit of this meter square. No problem. Now let me put the value 18 I am writing as it is, and viscosity is, you can say, 10 to the power minus 3 Pascal second, means 10 to the power minus 3 Pascal second. So can I make it these units is less complicated, means easy. Can I make it these units easy? So I can break Pascal into, Pascal means Newton per meter square, Pascal means equal to Newton per meter square. Simple. So Pascal I am writing here simply Newton per meter square. I will write the same color here, so that okay, so this will be your Pascal means Newton per meter square I am writing here. Okay, meter square I am writing here, because Newton per meter will be go upside. Okay, no problem. So can I break Newton into the kilogram, so that I will cut kilogram to kilogram? Okay, no problem. It means what? You will write what? Ki 1 Newton equal to 1 mg. Yes, mg. M means kilogram. G means meter per second square. Okay, so 1 Newton can be written as kilogram meter per second square. Okay, so I will write 1 Newton equal to kilogram. Okay, kilogram, and meter I am writing meter. Okay, second square will be go upside, so second square I am writing here. Okay, I am writing second square. Okay, no problem. So now I am cut all the units and see what the remaining unit you will have. Okay, so kilogram, cut it out, no problem. And 4 meter to the power 4 will be cut meter cube and meter. Okay, no problem. And second square will be you will see second square. Okay, now the remaining unit will be what, meter per second, and this should be the unit, and this should be the value of terminal velocity. No problem. So now यही मुझे चाहिए था, यही मुझे मिल गया है. So if I am doing the calculation in front of you, so I will do the multiplication. 9.8 multiply 100 into 100. Okay, 100 into 100 multiply 1800 minus 100, it will be your what, 800. Okay, 1800 minus 1000 na, so it will be your 800. Okay, so now divide by 18. Okay, and what happened, this will be cut it out 10 to the power minus 9, I think. Okay, and now divide by 10 to the power 9, so you will get what, 4.355 10 to the power minus 3 meter per second. This would be your answer. So you can write 10 to the power 4.36 10 to the power minus 3 meter per second. So answer will be, I think, yes, this is the A will be right answer. So simple thing is that. तो इससे पहले मुझे ये कुछ समझना होगा कि मुझे मिनिमम सेटलिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, मिनिमम क्यों बोल रहा था, और ये सारी कहानी मैंने सीख ली है.
बात समझ रहे हैं? सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर. ओके, एंड इसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छा गिवन है, क्योंकि सारे के सारे टाइप्स मैंने कराए हुए हैं. जब बबल पॉइंट प्रेशर से नीचे होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, स्ट्रेट होगा, कब क्या लगेगा, और इक्वेशन ऑल्सो गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एग्जामिनर इतना अच्छा था कि उसने इक्वेशन भी दे दी कि कभी बच्चों को पता ना हो और बच्चों को परेशानी ना होनी चाहिए. बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके की चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं. तो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन. An oil well is tested, a flow rate is given, okay, and the bottom hole flowing pressure PWF is given. Yes, no problem. It means मुझे flow rate given है at this PWF पे, and certain pressure is given. It means this is your P reservoir. If PWF is lower to 300, assuming the Vogel equation will be applied, or the Vogel equation is valid, so the flow rate will be the estimated flow rate of the oil at this particular pressure, I think. Okay, yes, this is I have to calculation, no problem. So definitely this pressure पे, suppose I am making the graph, this is your Vogel equation is applied, तो definitely that will be curve form. Okay, ये मैंने बता रखी चीजें सबको. So मुझे पता है कि if the reservoir pressure is 5, like reservoir pressure is 1000, okay, and 500 पे your flow rate is what? Your flow rate is 50. So definitely 300 पे your flow rate should be higher. So answer जो है वो 50 से ऊपर आने वाला है. ठीक है, no problem. So now what I will do, I will use this particular equation. Okay, so I will do what? I will use this particular equation because I know I'm writing here. Okay, I'm writing here Q is given. I know the Q. First use the questions. What is the given value? Okay, Q is given, that is your 50. Okay, Q maximum I will calculate. Okay, Q maximum I will calculate equal to 1 minus 0.2, and this is your PWF what? PWF what? Yes, that is your 500, and P reservoir I know very well, minus 0.8. Formula is given yaar in the questions. Okay, it means that will, nothing you have to do, only you have to do calculation. This is the question. You will calculate Qmax from here. You will calculate Qmax from here, and if you calculate the Qmax, then again you will use this for particular formula. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई बार ये चीज़ें बोली हुई हैं. अगर आपकी लाइन स्ट्रेट है तो आप एक डाटा से दूसरे डाटा पे पहुंच जाओगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ PI. अगर आपका इस तरीके का इक्वेशन है तो एक डेटा से दूसरे डेटा तक पहुंचने के लिए आपको Qmax की हेल्प लेनी पड़ेगी. बात समझ रहे हैं? ये मैंने चीज़ें बताई हुई है क्वेश्चन अपने लेक्चर स्टेज में. ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया. तो सपोज द Qmax वैल्यू इज यू आर गेटिंग दिस, दैट इज योर बैरल, दैट इज योर mean this was what? This was barrel per day. Okay, barrel per day, no problem. Okay, and again you will use this particular equation. Why? You will use this कि sir I know this time Q maximum, so can I calculate Q this time? Yes, Q maximum I know, this is the box barrel per day equal to 1 minus 0.2, and PWF at what PWF you want to calculate flow rate? I know that is your 300, means your 300 value, and your PWF, your reservoir is this. Same I will do. Okay, this is your 1000. Okay, no problem. So can I calculate this term easily? You will get, and you will multiply by this, so you will get this. Suppose this value barrel per day. Okay, this is simple. So I know the flow rate and PWF value, so that I can calculate Q maximum. Again I know this PWF this time only, so corresponding this PWF what will be your peak flow rate, so I can calculate using same equation because this time Q maximum I have. ओके, सिंपल क्वेश्चन. तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपको इस एक अच्छे क्वेश्चन को समझाने में दे दिया है. सो इसको मैं जस्ट से मैंने कर दिया है बिकॉज सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता है. और आई टोल्ड यू कि द फ्लो रेट दिस टाइम यू विल गेट दैट इज ग्रेटर देन 50, तो यू विल सी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, ओके. मैक्सिमम मैक्सिमम आपको ज्यादा मिलेगा जो कि 70-80 मिलेगा. ठीक है, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम. ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम. सो दिस वाज द आई थिंक सिंपल क्वेश्चन. सो ऐसे मैंने इसको कर दिया है. कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बात कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, तो नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जो इसका है वो ये है. ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन जो बच्चों को लगा था उस टाइम पे. हालांकि आज लग रहा है या नहीं लग रहा है वो मुझे नहीं पता, पर उस टाइम पे जो बच्चों को लगा था वो ये लगा था. और बहुत बच्चों से क्या, इनफैक्ट मुझे लगता नहीं कि ये उस टाइम पे एग्जाम में हुआ होगा. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इस क्वेश्चन को देख के डर जाना एक हम लोग अवॉइड, चल छोड़ो यार इसको बाद में करेंगे, और बाद में हमारे पास टाइम होता ही नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो. ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है, ये मुझे ये लगता है कि जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना गेट में, मैं आपको सही बता रहा
रहा हूँ, जो 5 क्वेश्चन गेट में होते हैं वो गेट के टाइम पे करने के होते ही नहीं है, आपको बता रहा हूँ। और हम उन 5 क्वेश्चन के चक्कर में बहुत कुछ पढ़ जाते हैं और उन बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में इतना टाइम खराब कर देते हैं कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस और स्पीड पे काम थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाते, और उसकी वजह से मेरे वो क्वेश्चन गलत होते हैं जो कभी गलत होने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए या ना हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसी से भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो आसान क्वेश्चन वो गलत अगर तुमसे हो जाए, और आप भारी तो तुमसे बने ही नहीं है, तो वो भी गलत हो जाए आसान भी, तो तुम्हारा काम खराब है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 65 पे अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको 60 और 55 से ऊपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और आपको उनमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई सिली मिस्टेक कुछ भी नहीं करनी है। और वो चीज आएगी जब आप स्पीड और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे देंगे, ना कि ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने पे, जो कि ये है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उसी कैटेगरी में रखता हूं कि ये घर का क्वेश्चन है, ये HW का क्वेश्चन है। जैसे बचपन में होता था कि HW CW, सो दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको घर पे करना है, गेट में नहीं करना है। ठीक है, वहां पे अपने वो 55 से 60 क्वेश्चन करके आ जाने हैं, बट उनमें से अगर आपके 52, 53 भी सही हो गए हैं तो आप 80 प्लस आपके नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम लोगों को कहीं भी इन 5 क्वेश्चन के चक्कर में अपने आसान क्वेश्चन को बर्बाद नहीं होने देना है, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो ये उन्हीं 5 में से क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको समझाने के लिए टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई हैव मेक यू डिफरेंट पिक्चर्स। ये सारा काम मैंने तुम्हारे लिए किया है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ, और इसमें 2-3 तरीके में लगा सकता हूँ करने के। ठीक है, तो इसमें स्लोप के हेल्प से कर सकता हूं। ठीक है, इसमें P लाइक x(y)=mx+c से कर सकता हूं, लेकिन ठीक है, इसको और सिंपल तरीके से कैसे कर सकता हूं, दैट आई विल शो यू। ओके, सिंपलेस्ट वे आई विल शो यू। So I will read this particular question. Okay, a cylindrical pipeline of length is 30 km is transporting naphtha. Okay, there is a pipeline of 30 km, or that will be transporting naphtha. This is a pipeline. Okay, and pressure sensor attached along this particular pipe to detect the leaks. Okay, so I have installed different pressure sensor at different length to detect is there any leak or not in this particular pipeline. Okay, that we will see. No problem. So unsteady state leak force free operation, there is a linear pressure drop along this particular length. Linear pressure drop, linearly pressure drop you will see. Okay, normally. Okay, if the leak occur in the pressure profile, the pressure profile develop a kink at the leak point. Kink means your sudden direction change, like your sudden change you will see. Kink means your bending you will see. Okay, so that is your, इसलिए मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। तो now you will see initially, and you will see कि different length पे I have installed a pressure sensor, and this pressure reading is this. Initially P note pressure, and 4 km you will see this pressure, and 27 km is this, and this is the pressure. Okay, no problem. And इसको कहीं से पता चला, assume हुआ कि the leak point जो है, what is the leak point, that is your between in 4 km to 27 km, इसके बीच में कहीं पे लीक है। Okay, no problem. A new steady state condition is reached. A steady state pressure measure at 4 location along the pipeline, जो कि मुझे यहाँ पे टेबल में given है, but you will have in the table the location of the leak point using the gradient intersection method. Okay, leak point I have to calculate. So now we will see the question. Okay, simply I'm telling you it's a normal pipeline and fluid is flowing and there is a no leak, so pressure degrade with a normal specific gradient through this point to this point with a gradient is constant. Means जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है वो नॉर्मली एक ही ग्रेडियंट से घटता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बट जैसे कोई लीक मुझे मिलता है, उस लीक की वजह से मेरा जो प्रेशर ग्रेडियंट का डिग्रेड का रिडक्शन का जो ग्राफ है, दैट इज चेंजिंग, दैट ग्राफ विल हैव ए किंक, दैट ग्राफ विल हैव ए बैंड। Okay, so now you will see we are having a 4 km, 0 km, 4 km and 27 km and 30 km sensor. Accordingly, you will have the chart what is the pressure value you are having in these 4 sensor. No problem. Okay, no problem. So now I have to detect what is the leak point, and in this particular pipeline according to this particular pressure data, and you will see कि
he is giving the hint also कि the leak point should be or will be 4 kilometer in between of 4 kilometer to 27 kilometer. Okay, no problem. So suppose the leak point, so he is telling us कि normally a graph of this particular pressure degradation, pressure linearly degrade, okay, this is a linearly profile. Okay, if leak is not there, but suppose take example there will be a leak, so this is the leak point, and suppose the leak point from the x kilometer, from the 4 kilometer you will have the x distance. Okay, and remaining distance from the 27 you will have the 23 minus x, because this is your 23 kilometer and this is your x kilometer, the remaining distance you will have the 23 minus x. Okay, and suppose this pressure profile is this when your leaking point is not there, but if you are having the leaking point, then your pressure profile has the bend or kink in the pressure profile. Okay, so what will be the pressure profile now? The pressure profile will be same. This is the same approach parallel when the before the leaking point, and after the leaking point pressure profile will be different. Okay, so this is the main zone I am talking about. This is x kilometer, this is also 23 minus x kilometer, and this is the main zone. This is the main zone I have to calculate. So how I will calculate that we will see. Just tell me, if I am taking this pressure value, what is this slope, what is the gradient of this particular profile. Okay, so this gradient will be same here, this gradient will be same here. Okay, and what is the gradient here, that will be gradient will be same here. Okay, no problem, simple thing is that. Okay, and this gradient I can also calculate. Okay, no problem. So let's see how we will solve it, my dear. Okay, so अगर मुझे ये gradient मिल गया तो ये भी वही होगा, अगर ये मुझे मिल जाता है तो ये भी वही होगा, और ये मैं निकाल सकता हूं, अभी देख लेंगे कैसे. ठीक है, और उसी के हेल्प से अगर मुझे ये ग्रेडियंट मिल गया तो उसके वजह से मैं प्रेशर ड्रॉप यहां पे निकाल लूंगा, एंड ये ग्रेडियंट मुझे पता ही है, इसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप यहां निकाल लूंगा, और दोनों का प्रेशर ड्रॉप इस जोन में, इस पार्टीशन में सेम ही होगा. ठीक है, दैट वी विल सी. ओके, सो नाउ वी विल आई विल सोल्व द क्वेश्चन फॉर यू. सो यू विल सी द फर्स्ट स्टेप, माय डियर. Pressure drop gradient 0 to 4. Pressure drop gradient 0 to 4. How? What is the pressure drop 0 to 4? That will be what? Pressure drop gradient means what is the pressure drop from this point to this point, and what is the distance? The pressure drop will be 1 minus 0.84. It will be 0.16, and divide by 4. 0.16 P naught divided by 4 kilometers, you will get this. Means 0.04 P naught is decreasing per kilometer. No problem, you will get this. Now what is the gradient of this gradient? Okay, we will see this also. Okay, we will see. Let me take this particular. Okay, you will see. Yes, you will see. You will see what? Pressure drop gradient 27 to 30. 27 to 30, this is the gradient. Means what is the pressure degrade from this point to this point? Set 0.252 minus 3.1 means means what? 0.31 minus 0.25 upon distance is what? 3. So it means the difference is this and distance is 3. You will get this pressure drop in this particular region. Okay, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट मुझे यहाँ मिला है वही यहाँ पे भी यूज करूंगा, जो यहाँ मिला है वो यहाँ पे यूज करूंगा, बिकॉज ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. बात समझ रहे हैं? ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके, सो नाउ हाउ व्हाट इज द ग्रेडियंट इन दिस पर्टिकुलर जोन? सो हाउ आई विल कैलकुलेट? आई विल कैलकुलेट, माय डियर. ग्रेडियंट मीन्स इन नॉर्मल कंडीशन, दैट इज योर नॉर्मल कंडीशन, द ग्रेडियंट विल व्हाट? आई एम राइटिंग हियर ग्रेडियंट. ओके, ग्रेडियंट इक्वल टू, ठीक है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्रेशर इज व्हाट? डिफरेंस इज दिस, मीन्स 0.84 minus 0.31, you will get 0.53. Okay, this is your P naught, and divide by what? Divide by 23. So divide by 23, so you will get what? 0.02304
P naught per kilometer. In normal trend, when the leak is not there, then the pressure gradient from this point to this point is this. Okay, no problem. Or now just tell me the pressure drop from this point to this point with the leak and pressure drop this point to this point without leak will be same. Leak से pressure drop पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. There is no effect in the pressure drop because of the leak. Okay, so now you can do what? कि sir, what is the pressure drop total from this point to this point when the in 1 kilometer pressure drop is this? So you will do what? Multiply by this distance. This is what? 4 to 27. This is distance is what? 23 distance. Okay, no problem. Equal to the pressure drop this plus pressure drop this. No problem. I have the gradient of this value. and I will multiply by x. I will multiply by 23 minus x. So if I am adding this and this equal to this, so you will get the value of x. Okay, so now I will do the same process. So now you can see the calculation. Okay, now you will see the calculation. Means this, suppose this distance is x, and now the gradient you know very well from this point to this point is your this. So this is the same gradient you will have this point to this point. So 0.04 P naught multiply x. Okay, plus this gradient is what? This is the gradient. Means what? 0.02 multiply 0.02 P naught multiply 23 minus x. If I add these things equal to the same gradient, means 0.023. This is the 0.0234 P naught per kilometer multiply 23. So you will get the x value from here. X is 3.496. Okay, so it means this is the 3.4. I'm writing here 3.496. So what is the distance from the leak point, from the initial point? That will be your this plus this is this distance what? 4. So you will get your right answer. Okay, so that is 7.496, and your answer range in the GATE is what? 7.20 to 7.80. means this answer is middle of this particular range. Okay, so ये मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया था. ठीक है, काफी टाइम लग जाता है ब्रो इन चीजों को समझाने में और बनाने में. ठीक है, और आपको झट से 5-10 मिनट में चीजें क्लियर कर दी हैं. ठीक है, इसमें मुझे लगा होगा मतलब लग जाता ना टाइम, 2 घंटा 1 घंटा लग गया समझाने में किस तरीके से समझाऊं. 2 तरीके थे एक्चुअली मेरे पास इस क्वेश्चन के. एक स्लोप निकाल के भी था y = mx + c, बट वो मुझे बड़ा और थोड़ा सोल्व करने में गलतियां उसमें होने के चांसेस मुझे दिखते हैं, और ये एक थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन का ग्राफ, ये पिक्चर वगैरह भी ड्रॉ कर दिया आपके लिए. ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम. सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है गेट में. इसी के ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो टिपिकल लेवल पे भी बोलूँ तो मैं उन्हें अपने लेक्चर सीरीज में कवर किए हुए हैं. we have discussed all the questions related to this concept and typical to typical level also, but यहाँ पे जो गेट में क्वेश्चन आया था वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आया था, वो कैलकुलेशन बहुत इजी था. नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट. ओके, व्हाट हैपन, सपोज यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर वेल बोर, एंड इन दिस पर्टिकुलर वेल बोर this is the zone of sandstone zone. Okay, in sandstone zone definitely if you want to do the acidization, so you will do what? Mud acid on HCl plus HF. Okay, so you just tell me mud acid, if you are using 15% mud acid, this is your 12% like 3%. So just tell me if you are injecting this particular mud acid, so you are sending HF also, and maybe in sandstone zone there is some particle of CuCO3, and this HF will react with CuCO3 and precipitation will form. And जो मुझे अच्छा करने जाना था वो मैं बुरा करके आ गया. मुझे जाना था एक फ्रैक्चर्स और एक जोन और डिजोल्व करने के लिए मिनरल को, और वहां पे डिजोल्व तो क्या और प्रेसिपिटेशन बना के मेरे जोन को डैमेज करके आ गया है. तो मैं चाहूंगा, आई ऑलवेज वांट कि बिफोर इंजेक्टिंग मड एसिड आई विल डू द प्रीफ्लश. इन दिस प्रीफ्लश आई विल सेंड द HCl ओनली, सो दैट दीज HCl विल डिजोल्व CuCO3 एंड तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर हो जाए, और उसके बाद तुम HCl HF भेज दो जो कि मेरे इन आयन को पहले ही खत्म कर देगा HCl, और अब मेरा HF इसके पास साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑल द मिनरल हैज बीन डिजोल्व. दिस कार्बोनेट मिनरल हैज बीन डिजोल्व, कैल्साइट मिनरल हैज बीन डिजोल्व. तो अब यहाँ पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है.
ठीक है। तो बिफोर मेन फ्लश वी विल डू द प्री फ्लश, और प्री फ्लश के बेस पे ही ये क्वेश्चन गिवन है, प्री फ्लश के बेस पे ये क्वेश्चन गिवन है। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्री फ्लश ओनली। ओके, ए वेल इज वेरी लार्ज रिजर्वर हैज ए वेलबोर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज अ वेलबोर। प्यार से समझना, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ओके, यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, बस कीप पेशेंस। तो लाइक रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज गिवन लाइक व्हाट 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर मीन्स it will say this is your like 0.1 meter, I think 0.1 meter you can say, no problem. Okay, so now if the sandstone with the porosity is given, yes, okay, this is the zone. Okay, this is the zone, you will see this is the zone. Okay, sandstone zone. Okay, sandstone zone. Okay, the porosity of this particular zone is given, that is your what 0.25. Okay, and 12% by grain volume calcite mineral is there, means suppose this is the grain and the mineral will be where, mineral where you will see the mineral, definitely mineral will be 1 minus 5 space, because this is the pore space, and remaining the pore space, that is your 0.75. okay, and in 1 minus 5 0.75 there will be some sand particle, and some 12% will be your what, 12% will be your calcite mineral. He says that 12% calcite mineral, there is calcite concentration of calcite mineral, or sorry concentration of mineral, that is your 0.12%, no problem. Okay, and to be acidized with a pre-flush HCl solution, okay, so as dissolve all the calcite up to distance 1 meter. Okay, हम लोग pre-flush कर रहे हैं so that the distance of 1 meter has been covered, and all the mineral of calcite should be dissolved till 1 meter from the wellbore, not from the wellbore radius, from the wellbore. Okay, and 1 meter cube pre-flush, he is telling us what 1 meter cube of pre-flush is able to solve this meter cube कैल्साइट मिनरल। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे, मुझे नहीं पता ये क्या है, अभी मुझे कंफ्यूज कर रहा है भाई, मुझे पता ही नहीं है क्या है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट दिस, आई एम गेटिंग कंफ्यूज विद इट, सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ, assuming that the reaction between HCl and CO3, okay, HCl whatever we are sending and CO3 reaction will completely instantaneous, and minimum pre-flush volume is required per minute of the thickness. Okay, suppose the thickness I am taking H1 meter. Okay, H I am taking 1 meter. Okay, so what will be the mineral, what will be the acid I need required to complete this pre-flush of 1 meter thickness to dissolve all the mineral till 1 meter डिस्टेंस। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, अब मुझे ये पता है, आई नो वेरी वेल मिनरल रिक्वायर्ड इक्वल टू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पोर प्लस, क्यों? अब मुझे बताइए, जब मैं 1 मीटर तक, सपोज मैं यहाँ 1 मीटर डिस्टेंस तक का काम देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 1 मीटर तक का काम देखने को बोला गया है, एंड आई एम सेंडिंग योर लाइक व्हाट मिनरल सॉरी एसिड इनटू द फॉर्मेशन टू डिसॉल्व द मिनरल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब वो मिनरल जो एसिड में भेजूंगा अंदर, वो कहाँ पे यूज होगा, एट व्हाट लोकेशन, एट व्हाट प्रोसेस दैट एसिड इज यूज इन दिस पर्टिकुलर 1 मीटर थिकनेस, कहां पे वो यूज होने वाला है। ठीक है, सो डेफिनेटली जो मेरे खाली स्पेस होगा वो वहां पे जाके बैठेगा क्या? बिल्कुल बैठेगा। तो वॉल्यूम ऑफ पोर मुझे निकालना होगा 1 मीटर तक का, जिससे वो मिनरल मेरा वहां पे जाके, एसिड मेरा वहां पे जाके बैठ जाएगा। प्लस कुछ एसिड मेरा ऐसा भी होगा, लिसन, कुछ एसिड मेरा ऐसा भी होगा जो मेरे इस मिनरल को 1 मीटर तक जितने भी मिनरल हैं उनको डिजोल्व कर देगा, उनको डिजोल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर वॉल्यूम ऑफ मिनरल जो मेरा यूज होगा उनको डिजोल्व करने में। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो जितने में मेरे मिनरल में डिजोल्व करने में यूज हो जाएगा, जैसे होता ना कि 10 लोग गए और 10 लोग उधर से आए, दोनों में लड़ाई बजी और ए टीम के 8 लोगों ने उन 10 लोग को मार दिया। ठीक है, अब 2 लोग जाके वहां बैठ जाएंगे, तो 8 लोग मेरे यूज हो गए उन लोगों को मारने में। तो कुछ एसिड का जो मेरा वॉल्यूम है वो मेरा यूज होगा
कुछ मिनरल को डिजोल्व करने में, ठीक है, तो वो भी वॉल्यूम में जोड़ूंगा, ठीक है, वो खर्च हो गया, प्लस जब मेरा मिनरल डिजोल्व हो जाएंगे उनके जगह पे जो खाली स्पेस बचेगा वहां पे भी आके मेरा फिर मिनरल बैठ जाएगा। सो द मिनरल आई एम एडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दिस इज द वॉल्यूम दैट आई रिक्वायर्ड टू इंजेक्ट टू डू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे मेरी चीजें इस तरीके से बनी है कि क्या कि सबसे पहले मेरा पोर में जाके मिनरल बैठेगा, प्लस उसके बाद कुछ मिनरल मेरा डिजोल्व करने में खर्च हो जाएगा, प्लस डिजोल्व करने के बाद जो खाली स्पेस बचा है मिनरल को डिजोल्व करने के बाद वहां पे जो खाली स्पेस बचेगा वहां पे भी मेरा एसिड जाके बैठ जाएगा। तो ये इतना वॉल्यूम, इन 3 तरीके का वॉल्यूम अगर मैं ऐड कर दूं तो इतना वॉल्यूम मुझे चाहिए इस काम को करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर, व्हाट अबाउट द एक्स? एक्स इज द पावर ऑफ डिजोल्विंग पावर। लिसन, मैंने ये बोला कि जितना वॉल्यूम खर्च करने में यूज होगा उसको डिजोल्व करने में यूज होगा उतना ही मैं यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर मेरी इसकी पावर ज्यादा हुई तो जब ज्यादा वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कम आएगा पूरा टोटल, तो इसका मतलब कम वॉल्यूम ऑफ एसिड विल यूज टू डिजोल्व ऑल द मिनरल बिकॉज द पावर इज हायर। इफ डिजोल्विंग पावर इज लेस so this value is less, okay, and if you are dividing this value from the less value so this complete value is higher, so it means the volume of acid which is used to dissolving process that will require higher and higher because the power is less, okay, so definitely this is the power, okay, so power unit is what कि how much dissolving power, how much mineral, how much meter cube mineral is dissolved per 1 meter cube acid. This is your dissolving power, okay, no problem. This is the means if this value is 5, so it means 1 meter cube acid dissolve 5 meter cube mineral, so it means the power is higher. If you can write like that कि this is 2 meter cube mineral can be dissolved by 1 meter cube acid only, so it means dissolving power or X means lesser, means dissolving power is less, so X representing in somewhere the power of this particular mineral, okay, so unit is what? Unit is X is what कि meter cube of mineral, okay, upon meter cube of acid, okay, acid, no problem. चलिए, so now if I'm getting this value, if I'm do the calculation, you will get the volume required to pre-flush in one thickness zone, okay, no problem. So other, it's a very easy point. I can calculate volume of acid. It's a very simple. Sir, volume of pore, it's a very simple, okay. How it can be possible? You can do the pi r square, ra square means at this particular point, suppose this is the radius of the wellbore, so this point ra square minus rw square into 5. It's a simple, okay, means this point to this square minus this square, so you will get only this area and multiply by porosity, so you will get only the pore volume of this particular zone, only the pore volume, okay, only the pore volume, okay. So now I will do the calculation, okay. Pi I am writing what? I am writing 3.14, and what ra means from this point to this radius, this is your 1 meter and this is your 0.1 meter, so this will be your 1.1 meter, okay. तो रेडियस ले रहे हैं ना हम, लेंथ थोड़ी ना ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, सो इट्स 1.1 मीटर। ये गलती बच्चों से होती है, माइनस rw स्क्वायर, इट्स 0.1 स्क्वायर, porosity is what? 0.25. Simple calculation. I am doing. Don't worry. 0.1 square minus 0.1. Okay. 0.1 square. 1.1 square minus 0.1 square. Okay, and multiply 3.14, okay, multiply 0.25, you will get this volume of pore value. You are getting 0.942. This is unit will be what? Unit, and H is what? 1 thickness. H means 1 meter. H I am writing 1, so it means 1, so it will be 1 cube, you can say, volume of this, okay, no problem. So this value I am getting, no problem. Okay, next value let me calculate, means volume of mineral. If I am getting this, so definitely this is the same, but now if we will see for the x value, no problem. हम लोग x का मामला फिर बाद में देख लेंगे, पहले m को निकाल लो, बिकॉज m ये दोनों एक ही है, एक निकाल लो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो Vm इक्वल टू मिनरल कहाँ है? मिनरल इन्हीं के रॉक के तो अंदर है,
ठीक है, अब देख लेंगे कैसे। मिनरल है आपके पाई सेम एज RA² माइनस RW², okay, this is the area and area multiplied by H is 1, okay, no problem, I am writing note, I am not writing H, okay, and definitely मिनरल कहाँ है, मिनरल है आपके जहाँ पे पोरोसिटी से अलग है बात, पोरोसिटी के अंदर तो मिनरल नहीं है, पोरोसिटी के अलग जहाँ ग्रेन है वहाँ पे मिनरल होंगे, सो आई एम डूइंग व्हाट 1 माइनस 5, ओके, एंड इन क्या पूरे जहाँ पे भी मेरा ग्रेन है क्या सारी जगह मिनरल है, नहीं, उसके अंदर भी मिनरल का कंसंट्रेशन ओनली 12% है, मीन्स आई एम राइटिंग CM. Okay, no problem. So I am doing the calculation. Pi means 3.14, R means 1.15, okay, square minus 0.1 square. This is your what? 0.75, and this is the concentration 0.14. Okay, no problem. So I will do the calculation. 1.1 square minus 0.1 square, okay, 0.1 square, or like this, okay, and multiply 3.14, okay, and multiply 0.75, okay, and then multiply 0.12, okay, 0.12. So you will get volume of mineral equal to 0.33912. Unit will be meter cube. Why? Because meter square or H also 1, so it will be meter cube. Okay, no problem. So I think this value I am getting, this value I am getting, this value I am getting. Sir, what about the X? X is what? X is what? कि how much meter cube mineral is dissolving in 1 meter cube of acid. So can I see this particular line? 1 meter cube of peripheral is able to dissolve this meter cube of COCO3. It means, can I write 0.082 meter cube of mineral can be dissolved 1 meter cube of acid? Yes, so it means this X value is directly given. This X value is directly given. ये एक मेन पॉइंट था, कई बार बच्चों को वहाँ पे ये नहीं पता चला था, अब तो खैर बच्चों को पता चल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे गेट के एग्जाम में जब ये बैठने के लिए बैठे थे बच्चे, उस टाइम पे बच्चों को ये नहीं पता चला सर ये वैल्यू दी क्या की है, ये एक्स वैल्यू दी है क्या, ये क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये कुछ को पता चल भी गया था, बट ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था कि सर एक्स वैल्यू, हालांकि एक्स वैल्यू का तरीका है निकालने का जो हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर सीरीज में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट एक्स इन अवर लेक्चर सीरीज, बट इफ डायरेक्टली वैल्यू इज गिवन तो वो एक बच्चों को लगा था कि सर डायरेक्टली वैल्यू हाउ यू विल रीड दिस पर्टिकुलर गेट, हाउ यू विल रीड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, तो ये क्वेश्चन में कैसे गिवन है ये मुझे पता नहीं चल पा रही, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, ओके, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ओनली. Now we will solve this particular question. Okay, so volume required equal to pore volume, I know that means 0.942 plus mineral value I am getting 0.33912 upon X value is already given, that is your 0.08182, okay, 0.082, okay, and plus this value again I am writing 0.33912, okay, no problem. Now I am doing the calculation and see the answer, okay, no problem. So 0.33912 divided by 0.082, okay, no problem, plus 0.33912 plus 0.942, okay, so you will get volume of acid required, volume of acid required equal to 5.416 unit meter cube, okay, meter cube per 1 feet, okay, meter cube per 1 feet. So no problem, so we will see the answer. Yes, this is the right answer. This is the 5.416. This is the middle point of this particular question. Okay, no problem. So I think this is the right answer. और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है. So this is all about the questions of GATE 2018 that has been asked. Okay, from the production engineering. So we will see the next session, next class, the question that has been asked in GATE 2019. Okay, so this is all about. Thank you very much. Have a nice day.